Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all once again. So today we're going to talk about something different, something new. आज की हमारी डे 3 की जो वीडियो होगी that will be great and that will be really interesting. कैसे interesting? हमने previous 2 वीडियोस में बात की थी कि how we use the verb. हम जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वर्ब की जो पहली फॉर्म है, वो कैसे इस्तेमाल करते हैं. आज वी आर गोइंग टू डू प्रैक्टिकल कन्वर्सेशन. आज हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी टॉक्स में. लेट अस सी. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक बंदा है, हिज नेम इज मिस्टर ए, और यहाँ पे एक बंदा है, हिज नेम इज मिस्टर बी. अब मिस्टर ए और मिस्टर बी आपस में दे आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आपस में पहली बार मिल रहे हैं. और यहाँ पे आके मिस्टर ए कहता है, हेलो, हाउ आर यू. मिस्टर बी इज से, आई एम फाइन, थैंक यू. मिस्टर ए कहता है, आई एम ग्लैड टू मीट यू, मुझे आपसे मिलके खुशी हुई. मिस्टर बी का रिप्लाई होता है, आई एम ऑल्सो प्लीज्ड टू मीट यू, मुझे भी आपसे मिलके खुशी हुई. अब ही इज आस्किंग, व्हाट्स योर डेली रूटीन, या व्हाट डू यू डू एवरी डे. 3 सवाल. व्हाट इज योर डेली रूटीन, व्हाट डू यू डू ऑल द डे, या व्हाट डू यू डू डेली. व्हाट्स योर एवरीडे रूटीन. नाउ द थिंग स्टार्ट्स हियर. जो हमने प्रीवियस वीडियोस में बात की थी कि आई वेक अप एंड ऑल द थिंग्स दैट व्हाट यू डू ऑल द टाइम एवरी डे, वी यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. हियर वी आर गोइंग टू टेल. नाउ मिस्टर बी इज टेलिंग, first of all, I wake up early in the morning. Well is the expression you can use many times. आप well बहुत मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यह आपकी expressions को enhance करती है. अब सी, अब he is asking, what's your everyday routine? What's your daily routine? Mr. B is replying that, well, I wake up at 8 o'clock in the morning. मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ. Then I take shower. After shower, I do my breakfast. I do my breakfast can also be I have my breakfast or I take my breakfast. And then after breakfast, I go to office. मतलब मैं ऑफिस जाता हूँ, या फिर you can also say I go to school. मैं स्कूल जाता हूँ. Then I come back home at 2 o'clock. मैं घर वापस आता हूँ 2 बजे. या फिर you can change the time also. I take rest for some time. And after that, I take tea in the evening. या फिर मैं शाम में चाय पीता हूँ. I take tea in evening. Then I go outside and play with friends. या फिर I play with my friends in the evening. यहाँ पे you can also use sometimes, जो चीज़ें आप कभी कभार करते हैं. Sometimes I play, sometimes I stay at home, sometimes I play outside. ठीक है. Then I do my dinner. अब मैं उसके बाद अपना डिनर करता हूँ. Finally, I go to sleep. मैं फिर सोने जाता हूँ. And you can use so many sentence expressions that, for example, I do my homework, I read books, I write stories, sometimes I play video games, sometimes I read Holy Quran. You can use these words and verbs for everyday routine. This is going to enhance your language skills. That is for today's class. We understood how we are going to say our daily routine. In tomorrow's class, we are going to understand something new with the same passion and energy. With that, may God bless you and thank you.